So today JAM Biotech paper question number 7 में आ चुके हैं and this one is pretty interesting. The most abundant phospholipid in E. coli plasma membrane में क्या रहता है? तो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में स्पेसिफिकली ई कोलाई में ये रहता है स्पेसिफिकली इन द ई कोलाई. नाउ हियर इज अ कॉन्सेप्चुअल एंकर दैट एक्चुअली bacterial membranes are simpler than eukaryotic membranes. So B membranes are simpler than eukaryotic membranes. They do not contain the cholesterol generally absent in the bacteria, and स्पिंगोमाइलिन भी नहीं रहता है जो यूकैरियोटिक सेल में रहता है. सो द कोर मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में क्या रहता है? पीई रहता है 70 to 80%. So this is actually phosphatidyl ethanolamine. So this is one, and then PG. This is a glycerol, phosphatidyl glycerol, and also this is actually 15 to 20%. ठीक है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्डियोलिपिन भी रहता है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो ई कोलाई में 70 to 80 स्टूडेंट्स वुड बी पीई एंड 15 to 20 वुड बी पीजी. सो लेट्स एनालाइज. सो दिस yes, most abundant, this is the correct one, and this is we have already done. And remember that this is common in eukaryotic plasma membrane, this choline here, and in case of serine here it's not major, and the other one as well. So the final answer is